हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। सो आई होप आप लोग अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होगे। अभी हम लोग केसी लाइक डिक्टेशंस की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम केसी जैसे मैटर्स लिखते हैं और अभी तक हमने कुछ डिक्टेशंस लिख लिए हैं और ये सीरीज हम कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं। कुछ कुछ दिनों में मैं आपको ये डिक्टेशंस जो है वो लिखवाता जाता हूँ। रेगुलरली क्लास के अंदर हम ये डिक्टेशंस लिखते ही हैं। वही डिक्टेशंस मैं आपको एक तरह से कुछ कुछ दिनों में यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके आप लोगों को से जितने भी लोग फ्री में लिखना चाहते हैं, जो क्लास में नहीं आ सकते, उनके लिए लिखवाता रहता हूँ। सो आज भी हम ये एक डिक्टेशन जो नेक्स्ट क्लास है हमारी उसमें लिखने वाले हैं। लिखने से पहले एक चीज आपको समझने की जरूरत है, जैसा कि हम हर क्लास से पहले समझते हैं कि जब भी हम डिक्टेशन लिखते हैं तो बहुत सारे लोगों की स्पीड नहीं आती, एक्यूरेसी नहीं आती। उस टाइम पर बहुत सारे टीचर से आप लोग पूछते हो कि हम कोई ऐसी आपको ट्रिक बता दें जिससे आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा लो, अपनी स्पीड बढ़ा लो। तो बेसिकली स्टेनोग्राफी जो है वो कोई याद करने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं। इसके अंदर आपको एक तरह से ये आपकी एक स्किल है जिसको आपको डेवलप करना पड़ता है प्रैक्टिस से। और जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते हो उसी के बेस पर आप अपनी स्पीड बढ़ा पाओगे, उसी के बेसिस पर आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा पाओगे। तो स्टेनो में कोई भी ट्रिक नहीं होती। स्टेनो में शॉर्ट फॉर्म्स कह सकते हो आप कि भाई कोई डिफिकल्ट आउटलाइन का हम शॉर्ट फॉर्म बना लें, हम हमारे हिसाब से कोई आउटलाइन समझ लें, वो आप चीज़ कर सकते हो। उसको ही आप ट्रिक बोल सकते हो, पर स्पीड बढ़ाने की, एक्यूरेसी बढ़ाने की कोई भी ट्रिक नहीं होती। उसको आपको बढ़ाने के लिए अपनी प्रैक्टिस को ही बढ़ाना पड़ेगा, तब जा करके आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अपने आप बढ़ेगी। तो यही बात से हम हमारा डिक्टेशन आज शुरू कर रहे हैं कि आप अपना माइंडसेट इसी टाइप से ले करके अपनी प्रैक्टिस करिया करिए। कोई भी ट्रिक या फिर शॉर्टकट आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो चलिए, ये आज हमारा डिक्टेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। 90 के आसपास की स्पीड रखने की कोशिश करता हूँ मैं, तो उसी के आसपास रहेगी। आप अपने यूट्यूब के फीचर से उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी हम ये डिक्टेशन लिखते हैं, तो आप इसको अभी लिखिए। गेट रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। Mr. Speaker, sir, thank you for giving me a chance. At international level, the AIDS project has been started to prevent HIV transmission. Has our government taken proper measures to educate such people? I would also like to know whether district hospitals and primary health centers are instructed to educate people and prevent the spread of HIV in rural areas, especially in close proximity to red light areas. Mr. Speaker, sir, while on one hand it is being talked about the therapy, on the other, especially in the region in Bihar from which I hail, there does not exist even the facility of conducting the diagnostic test for HIV in the government hospitals. The camps are organized by the government from time to time to make people aware about the disease. However, it is quite surprising to note that the facility of conducting the diagnostic test for confirming as to whether a person is HIV positive or not is not available in the government hospitals of not only my region but also in Patna, Para. Recently, a hospital has been opened in Patna. Through you, I would like to say that initially the people of my area are not aware of the disease. Secondly, they also feel a lot of embarrassment when people are asked to get the HIV test conducted. The samples to conduct the test
are sent to the hospital in Mumbai which costs rupees 1500 to 2000. Very well, but it depends on her whether to answer this question. But please do not do this. A supplementary means that it must be related to the main question or based on the reply of the Honorable Minister. Yes, I have understood your point and I have understood your anxiety in this matter. Honorable Minister, can you reply to this query of the Honorable Member? I suppose that the medicine is very costly. I would like to know this from the Honorable Minister. Has the government accepted this treatment as a part of the National AIDS Control Program? Is it within the reach of an ordinary man? If it is so, if the government going to make available such medicines in the government hospitals so that an ordinary man can get treatment. Para. Tenders for fresh empanelment or renewal of empanelment of private hospitals and diagnostic centers were invited in March 2004 and 768 hospitals and 404 diagnostic centers gave their bids or offers for empanelment or renewal of empanelment. All these offers or bids were scrutinized by a screening committee for checking whether the bidders fulfilled the eligibility conditions prescribed in the tender document and also whether the tender or bid had been filed as per prescribed procedure. Accordingly, 334 hospitals and 262 diagnostic centers have been shortlisted. These are now being inspected through the Quality Council of India for ensuring or verifying availability of infrastructure and staff. This inspection is necessary for ensuring that hospitals or diagnostic centers with lesser infrastructure do not get empaneled through misrepresentation of facts in tenders. Para. Tenders or bids of only such institutions have been rejected that had failed to comply with the conditions of the tender. Sir, time and again the Honorable Health Minister has stated, according to various media reports, that he was going to revise the CGHS and bring in its place a health scheme on the lines of Mediclaim. What is the thinking of the Health Ministry in this regard? When he brings in such a scheme, what will happen to the employees of the CGHS and what will happen to the CGHS beneficiaries who are undergoing treatment in various empaneled hospitals? Mr. Speaker, sir, several of the state capital cities do not have the CGHS dispensaries. While there is one dispensary in Kanpur, there is no dispensary in Lucknow, which is quite surprising. My first question is whether the government proposes to open the CGHS dispensaries in all the capital cities in the country.
Besides, the government also proposes to empanel certain reputed hospitals under the CGHS scheme so that the people could get treatment in those hospitals and get reimbursement for their expenses on treatment. Para. I would like to thank the Honorable Minister for his assurance to strengthen the said scheme given in the House. In my opinion, the first step in this direction would be to cover the high-tech hospitals of the state governments under the said scheme and opening of CGHS dispensaries in all the capital cities of the country. Sir, it is mentioned in the reply that tenders were invited a long time back, around 2 years ago. Till now, the Quality Council of India has not inspected the institutions. Many hospitals have come up with better value-added services in the last 2 years. Is there any proposal with the government to invite fresh applications so that these hospitals can also be sent for inspection along with the shortlisted ones for better utilization of health services by people at large? Stop. So I hope आप लोगों ने ये डिक्टेशन लिख लिया होगा अच्छे से। इसके अंदर कुल मिलाकर के 829 वर्ड्स हैं और 90 के आसपास इसमें स्पीड रही है। तो ये इतना मुश्किल डिक्टेशन नहीं है, जैसा केसी का लेवल है मैंने एकदम उस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करी है। लोकसभा की वेबसाइट्स पे से जितने भी पीडीएफ्स मुझको मिले हैं उन पीडीएफ्स के बेसिस पर जो डिक्टेशन बन सकता है, जो आपको लिखवाया जा सकता है, जो हम लोग लिख सकते हैं स्टेनो में, उसको मैंने निकालने की और आप लोगों को लिखवाने की पूरी कोशिश करी है। आप अगर अब ये लिख पा रहे हो तो एक तरह से आप अपनी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हो अगर इसी टाइप के डिक्टेशन आप रेगुलरली लिखते रहो हायर स्पीड्स पर। जैसे ये तो 90 पर था, अब इसी डिक्टेशन को 100 पे भी लिखो, इसी को ही 110 पे लिखो, 120 पे लिखो, ऐसे करके आप अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हो। सो ये आप हमारी क्लास जो है वो आज की यहाँ पे खत्म होती है। इसके अलावा ये जितने भी डिक्टेशंस हैं वो मैंने आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी लिखवा रखे हैं। बेसिकली जो हम क्लास में लिखते हैं रेगुलर वाली क्लास में, डेली जो हमारी क्लास होती है वही डिक्टेशन मैंने आपको लिखवाया है। तो यहाँ पर केसी लाइक डिक्टेशन का सेक्शन है जहाँ पर ये सारे डिक्टेशंस जो हैं वो अपलोडेड होते हैं। ये जो अभी हमने लिखा है वो यहाँ पर अपलोडेड है, इसको आप जा करके लिख सकते हो स्पीड के हिसाब से जो भी आपको एडजस्ट करनी हो। उसके अलावा आप इसका ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो जो आपको आपकी मिस्टेक शो करता है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे डिक्टेशंस जो है वो हमने वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं, जैसे टॉप 100 केसी डिक्टेशंस, प्रोग्रेसिव के इंपॉर्टेंट डिक्टेशंस। उसके अलावा जो है आपको अगर अनसीन डिक्टेशन लिखने की हैबिट नहीं बनी है अभी तक आप सीन डिक्टेशंस पे अटके हुए हो या फिर अनसीन में इतनी एक्यूरेसी नहीं आई है, तो अनसीन एक्स नाम से ये पूरा सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें वीक वाइज में आप लोगों को डिक्टेशंस जो है मैंने लिखवाए हैं और कैसे आपको उसके अंदर प्रैक्टिस करनी है वो सब कुछ मैंने वीडियोस के माध्यम से समझा रखा है। तो अगर आपने वो नहीं किया तो आप वो उस चीज के अंदर जाकर के अनसीन एक्स में जाकर के लिख सकते हो। इसके अलावा ये जो क्लास की पीडीएफ थी वो आपको यहाँ पर आ रही होगी, यहाँ से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।